Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have seen the questions of exercise 10.2 as well as the four theorems that are theorem 10.1, 10.2, 10.3 and 10.4. So I hope you have just understood them by watching the previous video. So now today in this video we are going to move further. That means we are going to discuss some more theorems here based on this chapter, and as well as then further we are going to move on to exercise 10.3, right? So starting off this video here with a topic which will explain you the theorems which I am going to discuss here now. So the topic is circle through 3 points, right? So यहाँ पे मैं 3 points लूँगा. Then let me just tell you कि ये जो 3 points मैं लूँगा, so they can actually exist in two cases. So यानी कि या तो ये 3 points जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर सकते हैं like this. That means कि ये जो तीनों points अगर सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, so they are let me just tell you that when we take 3 points which are lying on a same straight line, so they are called as collinear points, right? So अगर points same straight line पे lie करते हैं, so उन points को हम क्या बोलते हैं? Collinear points. Then the second case is here कि मैं जो 3 points लेने वाला हूं, they can be non-collinear. So as the name suggests you कि ये जो है points ये सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे, randomly different positions पे है. Let me just show you here that these 3 points will not lie on a same straight line, right? So here the second case is the non-collinear points, right? So like this. So here you can see these are the two cases which I am going to discuss in this topic. So before actually moving on to these topics here, I'm going to take a single point P, right? So let me just first make some space here. So here I'm going to take a single point P. Let me just take it right here. So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक point ले लिया P. Then you will find out that there may be as many circles as you like passing through this point. यानी कि एक single points में से infinite number of circles जो हैं वो pass out हो सकते हैं. Let me just show you. Like here this circle is passing through this point P. Then this circle is also passing through point P. Let me just draw it in a better way. Like this. Then there is another circle which can pass through this point P. Then there is another one. So there can be, you will find out, infinite number of circles which can pass out through a single point, right? So this statement is clear to you now. Now let me just move on and take 2 points P and Q, right? So let me just now rub this and take 2 points, right? So if I just take 2 points here like P, and let me just take it a little down, Q. So now again you will find out that there may be an infinite number of circles passing through P and Q. यानी कि 2 points अगर मैं लूं तो उसमें से भी एक ही टाइम पे दोनों points में से एक circle pass out हो सकता है, और वो भी infinite number of circles, right? So let me just take this as, so एक टाइम पे 2 points में से बहुत सारे circles pass out हो सकते हैं. You can see if I just take 2 points like this, then you can take it like this. So there can be roughly many number of circles which can pass through actually 2 points, right? So this statement is now also clear to you. So आपने देखा मैंने यहाँ पे 2 cases first लिए, that एक single point लिया तो उसमें से भी एक ही टाइम पे बहुत सारे circles pass out हो सकते हैं. Then मैंने 2 points लिए तो 2 points में से भी simultaneously बहुत सारे circle pass out हो सकते हैं एक ही टाइम पे. Now it's time to take this topic on which it is actually based. यानी कि अब मैं 3 points लूंगा, and as I have told you कि जब मैं 3 points लूंगा तो यहाँ पे 2 केस एग्जिस्ट करेंगे कि या तो तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे और they are not lying on a same straight line, यानी कि वो randomly
डिफरेंट पोजीशंस पे लाई करेंगे, राइट। सो ये दो केस की मैं बात करूंगा। वी नो दैट व्हेन द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, सो देन दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स। और जब वो रैंडमली डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, देन दे आर कॉल्ड एज नॉन कोलिनियर। सो दीज आर द टू conditions which I'm going to discuss when we take 3 points, right? So let me just now directly move on to that. So the first case है, सबसे पहले मैं collinear points लूंगा. So if I just take 3 collinear points like this, let me just name them as A, B and C. So अब एक ही टाइम पे इन तीनों पॉइंट्स में से क्या सर्कल पास आउट हो सकता है? Let me just tell you. So if I just take 2 points, 3 points, so then you will find out कि एक टाइम पे 2 पॉइंट्स में से एक सर्कल पास आउट हो सकता है, यानी कि 3 पॉइंट्स में से एक ही सर्कल एक ही टाइम पे पास आउट नहीं हो सकता. दिस इज अ इम्पॉसिबल थिंग. यू कैन जस्ट लुक एट दिस. सो दिस इज इम्पॉसिबल कि तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल एक टाइम पे पास आउट हो. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स में से एक ही टाइम पे एक सर्कल पास आउट हो तीनों पॉइंट्स में से. देन यू विल फाइंड आउट हियर लाइक दिस. मैंने यहां पे सर्कल ड्रॉ किया तो वो 2 पॉइंट्स में से एक टाइम पे पास आउट हो रहा है. देन आप देखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है हियर, द थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल. और दैट कैन बी लाइक कि अगर मैं 3 पॉइंट्स लूं, सो आइदर द पॉइंट कैन लाई इनसाइड ऑफ द सर्कल टू, राइट. सो यहां पे भी ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं. सो यहां पे भी अगेन आप देखेंगे कि 2 पॉइंट्स में से एक टाइम पे सर्कल पास आउट हो सकता है. सो यहां पे इस केस में आप देख सकते हैं, या तो पॉइंट इनसाइड हो सकता है या फिर थर्ड पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करेगा, राइट. सो आइदर द थर्ड पॉइंट कैन लाई इनसाइड द सर्कल और इट कैन लाई द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, यानी कि एक ही टाइम पे 3 कोलिनियर पॉइंट्स में से सर्कल पास आउट नहीं हो सकता. सो दिस कंडीशन इज इम्पॉसिबल. सो नाउ लेट मी जस्ट टेक द सेकंड कंडीशन, which is I'm going to take 3 non-collinear points. Non-collinear means they are not lying on a same straight line. So let me just take that thing here. So here if I just take 3 random points here which are non-collinear points, you see here. So let me just name them as A, B and C. Now the thing comes कि क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से साइमल्टेनियसली एक सर्कल पास आउट हो सकता है. सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ वी विल एक्चुअली फाइंड दिस. सो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये एक रैंडम पोजीशन पे है. सो कैसे पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल पास आउट हो? हम कैसे चेक करेंगे? नाउ लेट मी जस्ट शो यू हाउ वी विल चेक आउट कि ये तीनों पॉइंट्स जो है सर्कल में से एक ही टाइम पे पास आउट होंगे या नहीं. सो I'm going to join these points first. So join A and B, then join B and C, right? So ये जो है second case, when I'm taking 3 non-collinear points, that will be actually the theorem which I'm going to discuss here. So just observe it carefully. So यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं 3 non-collinear points लिए, then इस points को join कर दिया, then I have got 2 line segments AB and BC, right? अब मैं क्या करने वाला हूं? Let me just write that first. अब मैं यहां पे perpendicular bisector ड्रॉ करने वाला हूं. So perpendicular bisector. So what is a perpendicular bisector? So perpendicular bisector क्या होता है? Let me just tell you कि अगर मैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लूं और इसका मुझे perpendicular bisector ड्रॉ करना हो, let me just tell you. So मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? यानी परपेंडिकुलर, जैसा कि नेम बता रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो कि इसके 90 डिग्री एंगल पे हो, राइट. सो दैट लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर. नाउ व्हाट अबाउट द बाइसेक्टर? सो यानी अगर ये लाइन जो कि परपेंडिकुलर है वो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो, सो दैट इज नोन एज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 90 डिग्री पे और उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो. सो वो लाइन क्या कहलाती है? perpendicular bisector. So in this case let me just take this as P and Q. So ये PQ क्या होगी? इस AB के लिए perpendicular bisector हुई, right? So you got what a perpendicular bisector is. So यहाँ पे इस केस में भी मैं इन दोनों लाइन सेगमेंट्स के क्या ड्रॉ करने वाला हूं?
perpendicular bisector to check whether these 3 points में से एक सर्कल साइमल्टेनियसली पास आउट हो सकता है या नहीं, राइट. सो इस ए बी लाइन सेगमेंट का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर हियर. सो हियर लाइक दिस, हियर मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर ली. सो वी नो दैट this is at a right angle and also divide this line AB in two equal parts, right? So let me just name it as PQ, right? So आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया, PQ, right? Now अब मैं बात करता हूँ इस BC लाइन सेगमेंट की. अब मैं इसकी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा. So here let me just draw a perpendicular bisector of this line segment, right? So आप देख सकते हैं इस BC की जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 90 डिग्री पे है एंड ऑल्सो डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट्स. सो लेट मी जस्ट टेक इट एज RS, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं AB और BC के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो लेट मी जस्ट टेक दिस पॉइंट एज O. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसा कि हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिए, अब let me just tell you another property of a perpendicular bisector, right? So यहाँ पे मैं again एक रफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं एक लाइन का, you can see like here AB is a line, और मैं इसका अगर perpendicular bisector ड्रॉ करता हूं like this, so यहाँ पे ये 90 पे है और ये equal parts में डिवाइड कर रहा है, so this is a perpendicular bisector of AB. अब जो प्रॉपर्टी है इस perpendicular bisector की कि इस perpendicular bisector के ऊपर कितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स से इस लाइन सेगमेंट के ये जो एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट के क्या है, एंड पॉइंट्स. सो ये इस पॉइंट से जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, उस पॉइंट से इन दोनों एंड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, लेट मी जस्ट टेक इट एज ओ. सो ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम लेंथ का होगा, इक्वल लेंथ का हमेशा, चाहे तो आप कोई भी पॉइंट से ड्रॉ कर लीजिए. सो दिस इज ऑल्सो ऑफ सेम लेंथ, then this is also of same length. So यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर किसी भी पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो हियर यू कैन सी ये जो O पॉइंट है ये इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं A एंड B, इसका डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा, O पॉइंट से सेम हो जाएगा, राइट. So you can see here this OA is now equal to OB, right? So this distance is same. Now talking about the second perpendicular bisector, that is of BC. So ये perpendicular bisector के ऊपर भी ये O point lie कर रहा है. You can see here इस O point क्या है, इस perpendicular bisector के ऊपर भी lie कर रहा है. So इस point से इन दोनों end points का distance जो है BC के, वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि OB डिस्टेंस जो है वो OC के भी इक्वल होगा, राइट. सो हियर यू विल फाइंड आउट कि ये जो OA है वो किसके इक्वल है, OB के, और OC जो है वो भी किसके इक्वल है, OB के, यानी ये दोनों OA और OC किसके इक्वल है, सेम चीज के, OB के, यानी आपस में भी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो दैट मीन्स OA इज इक्वल टू OB एंड बोथ आर, सॉरी, OA इज इक्वल टू OC एंड बोथ आर इक्वल टू OB, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए. सो ये और ये डिस्टेंस जो है सेम है, राइट. सो लेट मी जस्ट टेल यू, इफ आई जस्ट गो बैक एंड वेयर आई हैव टोल्ड यू अबाउट अ सर्कल. सो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर हियर फर्स्ट. सो जब मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, सो मैंने आपको बताया था कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है. And that distance actually is called as the radius of the circle, right? So यानी कि सेंटर से अगर जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स लाई करते हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम, एंड दैट इज कॉल्ड द रेडियस. सो सेम कंडीशन इज हियर. यू कैन सी व्हेन वी हैव टेकन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, आप देख सकते हैं सेंटर से इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो हमने यहाँ पे देखा है कि सेम है, राइट. सो एक्चुअली दिस इज द रेडियस हियर, राइट. सो अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं टेकिंग दिस एज सेंटर, सो दैट सर्कल विल पास आउट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स, यानी कि आप देख सकते हैं एक ही टाइम पे इन तीनों पॉइंट्स में से एक सर्कल पास आउट
हो सकता है. So this is a possibility here, right? So this is actually what the next theorem which I'm going to discuss is saying, that there is only one and only one circle which can pass out through three non-collinear points simultaneously, यानी एक ही time पे, right? So this is the theorem here, that there is only one and only one circle which can pass out through three non-collinear points. So let me just now write the statement of that. So I'm going to erase the space here. So students, now you can see here I have written the theorem 10.5, which I have discussed right now, which says that there is one and only one circle passing through three non-collinear points, as I have shown here in this diagram. So you have seen that here are the three non-collinear points, then I have joined them like this. So अब इनका मैंने perpendicular bisector draw किया. So here you can see that they are actually meeting at a point, that means they are intersecting at a common point. So I have told you that this distance and this distance is same. So यानी कि ये क्या है यहाँ पे इसका radius हो गई. So that means कि अगर मैं इस center को लेके एक circle draw करूं, so you will find out कि ये तीनों non collinear points जो हैं वो एक time पे एक circle जो है इन तीनों points में से pass out होगा, right? So there is only one circle which can pass out through three non-collinear points at a time, right? So this is what this theorem 10.5 says, right? So this will be further used in the exercise when we will discuss the questions later. So you can see that was all in this theorem 10.5. So students, as we have seen theorem 10.5, which says that there is only one and only one circle which can pass out through three non-collinear points, right? Now it's time to move further. That means now we are going to discuss exercise 10.3, right? So let us discuss straightforward exercise 10.3. So question number first here is that draw different pair of circles. So यहाँ पे हमें different pair of circles जो है वो draw करने हैं. How many points does each pair have in common? So यहाँ पे पेयर का मतलब है कि दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे हम और चेक करेंगे कि दो सर्कल्स यू कैन सी कितने पॉइंट्स उन दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन है. सो बाय कॉमन दैट मींस कि अगर हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे सो वो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. लेट मी जस्ट शो यू विद एन एग्जांपल लाइक दिस. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं दो सर्कल्स ड्रॉ करूं सो इन दो सर्कल्स में कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं मैक्सिमम, राइट? दिस इज the question here. So how many points does pair have in common? So आप देख सकते हैं maximum कितने points common हो सकते हैं? 2 points. So whenever two circles, that means a pair of circle, intersect each other, so the maximum number of points at which they can intersect is 2, right? So if I just talk about 3 points, so हमें पता है कि there is a theorem 10.5 which we have seen just right now, which says that from 3 points only one circle passes, right? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 points अगर मैं लेता हूं so उसमें से सिर्फ एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है. We know from theorem 10.5, right? That means कि 3 points पे एक pair of circle intersect नहीं कर सकता each other, right? So that means there are maximum 2 points at which a pair of circle can intersect each other or have in common. So आप देख सकते हैं इन दो सर्कल्स के बीच में सिर्फ 2 पॉइंट्स कॉमन है, या आप बोल लीजिए कि सिर्फ 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटरसेक्ट कर सकता है एक दूसरे को, राइट? नाउ लेट मी जस्ट जॉइन दीज 2 पॉइंट्स. सो यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज अ कोड फॉर दिस सर्कल एज वेल एज दिस सर्कल. सो ये जो कोड है जो इन दोनों कॉमन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, दिस इज अ कॉमन कोड, यानी कि वो इस सर्कल के लिए भी कोड का काम कर रही है और इस सर्कल के लिए भी कोड का काम कर रही है. सो देन दैट कोड इज नोन एज कॉमन कोड, राइट? सो यू विल फाइंड आउट दैट इफ आई जस्ट गिव सम नेम टू दीज 2 एंड पॉइंट्स. सो ये आप देख सकते हैं ये कोड के क्या है? एंड पॉइंट्स है विच आर द common points in between a pair of circle, right? So then
the answer to this is that what is the maximum number of common points in a pair of circle? So the maximum number of common points is 2 in a pair of circle. यानी दो circle में maximum कितने points common हो सकते हैं? Only 2, because when they intersect each other, so there can be maximum 2 points where they can intersect each other, right? So अब also another thing here कि इस दो points में से infinite number of circle pass out कर सके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, right? So that means कि ये जो common code है ये बहुत सारे circles की common code है, right? So you can see the maximum number of points at which infinite numbers of circle intersect each other is 2. So this is the answer to your question. So the maximum number of points at which a pair or even infinite number of circles can intersect each other is 2. So that was all in this question. So students, let us move on to the next question now. So question number 2 here is, you can see, suppose you are given a circle, give a construction to find its center, right? So suppose कीजिए आपको एक circle given है, then अगर आपको उसका center find out करना है, so write the steps of construction to find out the center of that circle. So हम कैसे एक circle जो हमें given है उसका center find out करेंगे? So here you can see a circle is given to you. अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, राइट? सो हियर आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स and named them A, B and C. So the first step here is take 3 points A, B and C on the circumference of the circle. So how to find out the center of this circle? Let me just tell you. The second point is join AB and BC, right? So let me just join them first. So here AB, and you can see first there will be BC, right? If I just draw it a bit straighter here, so that will be like this, right? So यहाँ पे मैंने AB और BC को join कर दिया. So this is the second step of construction to find out the center of this circle, right? So the third step here is, you can see we have seen theorem 10.5 जहाँ पे हमने देखा था कि अगर 3 non-collinear points हैं, then we have joined them and we have also found the perpendicular bisector of the line segment made by joining them. So here the same condition exists. So अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे AB और BC का perpendicular bisector draw करूंगा, right? So here you can see, अगर मैं इसका perpendicular bisector draw करूंगा like this, so that will be at a right angle and also divide it in 2 equal parts. Then if I just draw the perpendicular bisector of BC, so that is also at right angle and divide it in 2 equal parts. So you will find out here, you can see if I just name them something, let me just extend this like this. So if I just name both the perpendicular bisectors as PQ and RS. So अगर मैं इसको नाम देता हूँ PQ and here it is RS, right? So आप देख सकते हैं PQ और RS मैंने ड्रॉ किए the perpendicular bisectors of AB and BC, right? So आप इन दोनों का perpendicular bisectors को ध्यान से देखें. So they are intersecting at a point, right? So this is going to be the center of the circle. So आपको समझ में आया हम कैसे एक सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट वी हैव टू टेक 3 points on the circumference of the circle and name them A, B and C. Then join these 3 points, that means AB and BC like this. So these two will act like the chord of this circle. So अब मुझे इन दोनों chords का क्या बनाना है? Perpendicular bisector like this. So how you will actually draw the perpendicular bisector? Let me just tell you. If I just take a simple straight line, so आपको क्या करना है? Suppose कीजिए ये लेंथ है इसकी AB. So आपको इसकी कंपास लेके इसकी हाफ से ज्यादा लेंथ खोल लेनी है, हाफ से ज्यादा. Then you have to simply put the pencil here and cut an arc, right? Similarly आपको नीचे भी एक arc draw करनी होगी यहाँ पर. Then without moving the compass, उतनी ही लेंथ खुली हुई आप यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे कंपास का. Then simply cut this arc here and likewise here. So आप देख सकते हैं इन दोनों आर्क्स को आप कट कर देंगे. Then simply join them with the pencil, right? So this is going to be the perpendicular bisector. So same case यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? कंपास लेके आप इस हाफ लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा खोल ले इस कोड के. So इतना खोलने के बाद आप यहाँ पे एक कट लगाएं.
देन यहाँ पे कट लगाएं, फिर यहाँ पर रख के इधर कट लगेगा, देन इधर कट लगेगा, राइट? सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग विल एग्जिस्ट विद दिस वन. सो हाफ से ज्यादा खोलने के बाद आप एक कट यहां लगाएंगे एंड देन एक कट यहां लगेगा. देन सिमिलरली प्लेसिंग द pointer of compass here, you have to again intersect that arcs, right? So here you will find out that this two, you can see the perpendicular bisectors are actually intersecting at a point. So that will be the center of that circle. So now you understand how to draw the perpendicular bisector and as well as to find out the center of any given circle, right? So this is the way and this is the step of constructions here. You can see 3 steps by which you can find out the center of any given circle. So that was all in this question.